ओके जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट्स? Yes, sir, easy there, sir. ओके, ओके, ओके जी, लेट्स स्टार्ट. Okay, so last time we were discussing parts of feasibility analysis. We had gone through first two parts, which were essentially the product service demand, product service feasibility, and then industry and target market feasibility. Okay, now we shall move towards the organizational feasibility analysis. So, what are the components of organizational feasibility analysis, or what is the purpose? So, this part of feasibility analysis is conducted to determine whether a proposed business has sufficient management expertise, organizational competence, and resources to successfully launch a business. Okay, so basically, to see that either there are resources available for us to launch this business or this business plan, right? For example, the resources here, we are not talking about the financial resources, okay, the other things like the management team, the organization, the place, some place where we want to establish all of this. Okay, so let's deep dive into this. Okay, so components of organizational feasibility analysis. So basically, there are two components of this part of feasibility analysis. The first one is management prowess or skill, and the second one is resource sufficiency. Here, we will mostly talk about the non financial resources because financial feasibility analysis is a separate topic. Okay, so what is management prowess or the management skill? So, a proposed business should candidly evaluate the prowess. The basically prowess means the skill, okay, skill or ability of its management team to satisfy itself that management has the requisite passion and expertise to launch the venture. Okay, so basically, the management is willing to and is passionate about launching this new business, and the management has the capabilities and the skills that are required for this business. Two of the most important factor in this area are the passion that the sole entrepreneur or the founding team has for the business idea. What is the passion basically? Because there will be a lot of points in that business where there may be some kind of loss. So you should have that passion so that you could accommodate that loss. The extent to which the sole entrepreneur or the founding team understands the markets in which the firm will participate. Okay, so again, that founding team or the basically the management team understands whether the management team understands the market and the industry where we are launching this business. So that should be a part of the management skill or prowess. Okay, resource sufficiency. This topic pertains to an assessment of whether an entrepreneur has sufficient resources to launch the proposed venture. Okay, the test resource sufficiency. A firm should least list the 6 to 12 most critical non-financial. Okay, please जहाँ पर ध्यान दें. These are non-financial resources, okay, that will be needed to move the business idea forward successfully. If critical resources are not available in certain areas, it may be impractical to proceed with the business idea. For example, if I talk about, let's quote it here. You want to run a solar thermal power plant, okay, so you are planning that, but you are planning it in Antarctica. So there, the solar radiation is very less. You don't receive enough energy, right?
So it is a novel idea for that place. Solar, I'm talking about the solar thermal power plant, okay, not solar photovoltaic power plant. But the resource, one of the major resources, that is solar thermal energy, will not be available there. So that will be a problem for us, right? सर Okay. बात सुनिएगा। जी जी। सर वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर रहे आप? लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। हाउ डू यू नो कि मैं नहीं कर रहा? सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया, इस वजह से मैंने कहा बता दो। नहीं, सॉरी। इसमें नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली ये थर्ड पार्टी लेक्चर रिकॉर्डिंग है, बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू द लेक्चर रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। ठीक है सर। ओके। Okay, so next, examples of non-financial resources that may be critical to the successful launch of a new business. So कौन कौन से हैं जो non-financial critical resources हैं? So affordable office space, okay, it is very critical. Lab space, manufacturing space, or space to launch a service business. फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त इस एयर यूनिवर्सिटी कामरा कैंपस के बारे में सोचोगे टू लॉन्च इट, सो द फर्स्ट थिंग वाज टू वेयर शुड वी लॉन्च इट, ओके, सो डू वी हैव दैट स्पेस, ओके, first one of the basic requirements, non-financial requirements, were the space or the area where we could construct that building. Availability of contract manufacturers or service providers, is it available in that area, or we will have to purchase this service from somewhere else? Okay. Key management employees now and in the future. So at the starting point, the air university required some different kind of management employees, okay, but now the requirement is different. So are those management employees available? Key support personnel now and in the future, again support staff available है या नहीं? Ability to obtain intellectual property protection, again very important, this term is very important. And ability to form favorable business partnerships, again all of these are non-financial resources which are critical. These are example, इसके अलावा भी हो सकते हैं, okay. And the last one is the financial feasibility analysis. Okay, this normally your feasibility analysis passes all the previous three criterias, but here it becomes a problem. Normally it happens, not always, but there is a chance that financial feasibility analysis may cause a problem. Okay, so what is the purpose? Is the final component of a comprehensive, it is the final component, okay. A preliminary financial assessment is sufficient, okay. This is the final component, but normally इसको हम पहले assess करते हैं. Okay, so what are the components? Total startup cash needed. First one is the total startup cash needed. Then we have the financial performance of similar businesses. So, what is the financial performance of the similar businesses, like the business which we are planning to launch? Okay, is that business being successful or not? अगर वो नहीं है सक्सेसफुल, सो सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या उस बिजनेस प्लान में कोई प्रॉब्लम है, उस आइडिया में ही कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा सिचुएशन है तो वी विल स्टॉप, ओके. Then overall financial attractiveness of the proposed venture. So what is the overall financial attractiveness? Again, this is an important thing. So let's break down these three components. So the total startup cash needed, first component is the total startup cash needed. The first issue refers to the total cash needed to prepare the business to make its first sale. Okay. So for making the first sale, how much we require initially from the, for example, इसमें क्या चीज आ रही थी? First sale means कि on the sale desk your product is placed, right? But वो कहीं हवा में से तोड़कर नहीं आ गया यहाँ पर this product. इसको परचेज से पहले it went
through shipping and deliveries बहुत सारी हुई, ठीक है. Then it was packaged. Before that, it was maybe assembled. Before that, it was manufactured. Before that, it was present in the form of, it was processed. And before that, it was present in the form of raw material. Starting from here up till here, you have reached until you have sold your first product. You cannot say anything about it. And the cash required to reach this point before selling, this is called your total startup cash. आपके जो फर्स्ट सेल है उससे पहले की जितनी इन्वेस्टमेंट की है सारे काम में आप, okay, सारे steps, that is your total startup cash needed. The first, okay, so an actual budget should be prepared that lists all the anticipated capital purchases and operating expenses needed to generate the first $1 in revenues. Okay, so this ये एक आपका बेसिक चीज है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो आपको पीछे जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. So the point of this exercise is to determine if the proposed venture is realistic given the total startup cash needed. Okay, so financial performance of similar businesses. Again, it is a very good indicator to एक अच्छा इंडिकेटर है ये. It may not always be a good indicator, but it is normally considered as good. That estimates the proposed startup's financial performance by comparing it to similar already established business. For example, you are planning to make a food delivery app, and you can see that what is the trend. For example, it is for Attic City. So you can see कि what is the trend. Either the food delivery app already established like Food Panda, either it is working good. Is there a, requirement or capacity to launch another similar business? Will it work good? So that is that how we can compare it. Okay, so there are several ways to doing this, all of which involve little ethical detective work. Okay, so यहाँ आप this means कि आपको थोड़ा सा डिटेक्टिव वर्क करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू सी, तो आप किसी एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं कि यार आपको मतलब एक दिन में हाउ मच डिलीवरीज यू यू डू, ठीक है, नटक सिटी की रेंज में. तो एक जो राइडर है उससे आप पता कर सकते हैं. यू विल गेट एन एस्टिमेट, या आप चार पांच राइडर्स मुख्तलिफ हों, आप उनसे पता कर सकते हैं. यू विल गेट एन एवरेज एस्टिमेट दैट व्हाट इज द सिचुएशन of overall this business. Okay, so first, or other ways, first there are many reports available, some for free and some that require a fee, offering detailed industry trend analysis and reports on thousands of individual firms. Okay, एक तो ये है कि you can maybe you get a report available in free, or you have to pay some fee that offers detailed industry trend analysis and reports of thousands of individual firms related to your. There are thousands of firms, so you can shortlist some firms related to your businesses related to your targeted business. Okay. Second, simple observational research may be needed. Again, सिंपल ट्रेंड की तरफ जाएं. फॉर एग्जांपल, द ओनर्स ऑफ न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक्स, जो मैंने शुरू में कोट किया था इसका, न्यू वेंचर फिटनेस ड्रिंक का, could estimate their sales by tracking the number of people who visit similar restaurants and estimating the average amount of each customer spends. Okay, so ये मैंने this I have told you. In our example, for example, आप किसी फूड पांडा के एक राइडर से पता करें, ओके यार आप एक दिन में एवरेज व्हाट इज योर सेल, या व्हाट number of deliveries you deliver, number of orders you deliver, and what is the average uh, cost per order. Okay, so you will get an overall idea.
Okay, so overall financial attractiveness of the proposed investment. So this means a number of other financial factors are associated with promising business startups. Okay. In the feasibility analysis stage, the extent to which a business opportunity is positive relative to each factor, is based on an estimate rather than actual performance. Definitely आप एक estimate की तरफ जा रहे हैं because up till this feasibility analysis आपका business launch नहीं हुआ. So how can you get the actual numbers? You will have to estimate and predict the performance of your business. The table on the next slide lists the factors that pertain the overall attractiveness of the financial feasibility of that. Okay, so this is the table. Financial factors associated with promising business opportunities, overall financial attractiveness के लिए steady and rapid growth in sales during the first 5 to 7 years in a clearly defined market niche. Okay, so this means कि पहले 5 से 7 साल में आप जिस proposed venture को target कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक अच्छी ग्रोथ हुई हो, उसके जिस एग्जांपल को आप लेकर जा रहे हैं, या तो 3 कंपनीज को सेम लेवल ऑफ कंपनीज को आप देख रहे हैं, तो इट शुड हैव फर्स्ट 5 or 7 years rapid growth, rapid and steady as well. High percentage of recurring revenue, okay, meaning that once a firm wins a client, the client will provide recurring sources of revenue. ठीक है, so this is also a good, for example, इसी तरह फूड पांडा की एग्जांपल है, तो आपका क्लाइंट ऐसा नहीं है कि उसने एक बार आपसे परचेज किया फूड ऑर्डर एंड डन, बार बार करेगा, राइट. सो एबिलिटी टू फोरकास्ट इनकम. अच्छा, मजे की बात, इफ यू नोटिस दिस, अगर आप में से किसी के कोई वालिद साहब, दादा, नाना या कोई भी रिलेटिव्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, और आज से 30 से 40 साल पहले वाला कोई इक्विपमेंट, कोई वॉशिंग मशीन या कोई एनीथिंग लाइक दैट, या इवन कि पाकिस्तान की चीज़ें भी आप देख लें, कार्स देख लें आज से 30 40 साल पुरानी वाली, सो दे वर वेरी गुड, वेरी गुड इन द सेंस कि वो बड़ी लॉन्ग, उनकी लाइफ स्पैन बड़ा लॉन्ग था, ठीक है. अभी भी वो पुराने जूसर ब्लेंडर्स चल रहे हैं जो कि पुराने हैं, ठीक है, वर्सेस आज का कोई आप अच्छी से अच्छी कंपनी उठा लें, तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या मैक्सिमम 3 4 साल बाद 5 साल बाद यू विल स्टार्ट टू नोटिस प्रॉब्लम्स विद दैट. ठीक है, क्यों? उन्होंने ये चीज़ असेस की सेम कंपनीज ने कि अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट एक बार दे दें अपने कस्टमर को, तो वो तो वापस आएगा ही नहीं जब तक कि वो ख़राब नहीं हो, और ख़राब वो होने नहीं दे रहे हम. तो दे चेंज्ड देयर tactics. Similarly, again, a very, this may be an unethical thing, but डॉक्टर्स, सम डॉक्टर्स डू दैट एज वेल. ठीक है, कि वो फुली रिकवरी की तरफ कुछ डॉक्टर्स, आप, इट इज़ अ कॉमन थिंग, आप लोगों ने सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं, वो घर में भी मना किया जाता है कि यू शुड नॉट गो देयर, आप जल्दी वहाँ ठीक नहीं होते. ठीक है, दे वांट अ रिकरिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू. तो वो तब ही होगा कि जब पेशेंट ठीक नहीं होगा. अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो व्हाट इज द केस, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये सब ऐसे करते हैं, मे बी अ वेरी माइनर परसेंटेज, बट इट हैपेंस. Okay, so ability to forecast income and expenses with a reasonable degree of certainty, internally generated funds to finance and sustain growth. Okay, so there should be internally generated funds as well, so that if there is some problem with finance and growth, you can provide some extra effort. Okay. सही, अवैस को प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइन करने में. ओके, आई होप के अवैस कर लेगा ज्वाइन. And one last but important thing, availability of an exit opportunity for investors to convert equity to cash. Okay, so this means कि आपके बिजनेस में से अगर कोई इन्वेस्टर निकलना चाहता है, ठीक है, एट एनी पॉइंट,
सो उसका वो जो निकलने वाला प्रोसीजर है दैट शुड बी सिंपल एंड नॉट इतना भी सिंपल ना हो बट नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. He or she could easily convert the equity to cash. Okay, whatever is the investment in whatever the form, he or she could get that in the form of cash and leave easily. Okay. Okay, so यहाँ तक we have discussed feasibility analysis. इसके पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया. So now there is a way of presenting the feasibility analysis. Now let's see that. It is called first screen. Okay. So it is shown यहाँ तो नहीं show होगा but it is shown in the book. So अगर आप इसी book जो मैंने upload की थी उसको देखें तो you will see that appendix 3.1. Okay. So appendix 3.1. Okay. Let me see. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि it is uploaded here. Screen visible है सबको? Yes, sir. Okay. Okay, so appendix 3.1. See यहाँ पर tab. Okay. Appendix 3.1 कहाँ पर होगा? Okay, let me check the. Feasibility analysis. Yeah, feasibility analysis आ गया. Okay. 3.2. Okay, table 3.2. Appendix 3.1. Okay, let me check. अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर बाद में देख लेंगे इसको. अपेंडिक्स. लेट्स सर्च. ओके जी, अभी यहाँ नहीं मिल रहा. अगर किसी को मिल जाए स्टूडेंट को तो प्लीज़ बता दीजिएगा पेज नंबर, अदरवाइज आई विल सी इट आफ्टर द लेक्चर. इट शुड बी समवेयर हेयर. अपेंडिक्स 3.1. अभी यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन नहीं आ रहा. ओके, एनीवेज लेट्स सी. ओके, वी इंसर्ट फाइल. फाइल. ओके.
ओके जी, आखिरकार मिल गया। विजिबिलिटी है, विजिबल। जूम थोड़ा सा कर जी जी, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये जो दिस, अरे क्या हो गया, दिस first screen is a format of presenting the feasibility analysis. Okay, what is the format? Ke out of all the questions, sorry, all the जो हमारे उससे कहते हैं हम जो we have defined the components of feasibility analysis. Okay, for example, पहला था हमारा product service feasibility. Okay, so let's see, let's go back to this. Okay, so out of all this product service feasibility हो गया, इसके आगे से दो components is the industry target and all, ये जो four parts हैं और उसके आगे से sub parts हैं. We give some questions. Okay, we ask some questions from all of these parts and we try to answer that. Okay, so let's see. And ultimately we get कि वो what is the, we get a numerical value. Okay, for each item circle the most appropriate answer and make note of -1, which is low potential, moderate potential is 0, and high potential means good. Okay, so वो हर, ये जो हर क्वेश्चन है उसके लिए इट विल बी अ डिफरेंट आंसर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, extent to which the idea takes advantage of an environmental trend, solves a problem, or addresses an unfilled gap in the marketplace. ठीक है, आपका कोई भी आइडिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स, कोई एग्जाम्पल मुझे एक बताए, उसके साथ हम फिर आगे सॉल्व करेंगे इसको. चलें, फॉर द टाइम बीइंग लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ जो मैंने आपसे बात की थी कि अमेजोन की, जी जी बोलें. अमेजोन की मैंने कहा लेनी। चलें, ठीक है, मतलब अमेजोन, Amazon की एग्जांपल ले लेते हैं. तो extent to which the idea takes advantage of an environmental trend, solves a problem, addresses an unfilled gap in the marketplace. ठीक है, सो चलें इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर अटेक सिटी जी मैंने कितनी बार आपके साथ शेयर किया, सो दैट इज व्हाई आई एम कोटिंग दैट. For Attack City, we don't have such an app which you know the will on which we have different contact numbers फॉर प्लम्बर्स एंड इस किस्म के जो जितने भी काम करने वाले लोग हैं. ठीक है, कि अगर कोई खुदा न खास्ता हमारे घर कोई प्रॉब्लम बन गया इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, प्लम्बर से रिलेटेड, तो ऑन अ ऑन सिंगल कॉल वी कैन कॉल समवन जो कि ट्रस्ट वर्दी है. ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये आइडिया है. ठीक है, हम एक इस किस्म की ऐप लॉन्च करना चाह रहे हैं जिस पर रजिस्टर्ड हो. ओके, सो एक्सटेंड टू विच द आइडिया टेक्स एडवांटेज ऑफ एन एनवायरमेंटल ट्रेंड, सॉल्व्स अ प्रॉब्लम या एड्रेसेस एन अनफिल्ड गैप इन द मार्केट प्लेस. So for the time being, it is a very strong idea, right? So ये बड़ा अच्छा आइडिया, स्ट्रॉन्ग है, सो +1 मार्क मिल गया. ओके, ओहो, ओके जी, इट हैज डिसअपियर समवेयर, बट मेन आइडिया वाज दिस. ये आ गया. ओके, स्ट्रॉन्ग है, गुड आइडिया. टाइमलेस, टाइमलीनेस ऑफ एंट्री टू द मार्केट, दिस में बी अ वेरी गुड टाइम. ठीक है, तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हमें बड़ा ही अच्छा टाइम है इसको लॉन्च करने का, इस आइडिया को, या इंतहाई बुरा टाइम है. नो, इट इज़ अ मॉडरेट टाइम. ठीक है, तो इस पॉइंट पर इट इज जीरो. एक्सटेंड टू विच द आइडिया एड्स वैल्यू फॉर इट्स बायर और एंड यूजर. अब ये आइडिया शायद कुछ लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा हो. ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए इट इज अ मीडियम, उनको नहीं फर्क पड़ेगा. जैसे कि हमारे पास यार, हमारे तो खानदान में ये इलेक्ट्रिशियन आता होता है, ये प्लम्बर आता है, वी नो दैट. अगेन दिस इज ऑन मीडियम. ठीक है, extent to which the customer is satisfied by competing
प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। तो यहाँ पर सर्विस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सर्विस एज सच एक प्लेटफॉर्म पर हमारे पास कोई नहीं है, तो वी कैन से नॉट वेरी सेटिस्फाइड। अभी जो इसका मतलब है कि ऑलरेडी अवेलेबल सर्विसेज जब है ही नहीं तो वो सेटिस्फाई कैसे होंगे, ठीक है। Then, degrees to which the idea requires customers to change their basic practices or behaviors, ठीक है। तो बिहेवियर या प्रैक्टिस ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेगी उसी, आई मीन दे विल हैव टू जस्ट मेक अ कॉल, सो वी कैन से इट इज स्मॉल टू नो चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ सकती है मे बी, या इसको आप ये भी कह सकते हैं मॉडरेट चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो हम इसको जीरो मार्क दे दें। So at the end of this whole situation, you will get, आपके पास टोटल कितने मार्क्स होंगे, मैक्सिमम 5 मार्क्स हैं, ठीक है। नाउ पहले हमने देखा था कि इट वाज स्ट्रॉन्ग, 1 मार्क, 5 में से 1 मार्क आया। देन मॉडरेटली टाइम, तो जीरो कोई उसने ऐड नहीं किया। मीडियम अगला भी था तो 1, एंड मॉडरेटली सेटिस्फाइड या नॉट वेरी, तो ये आ गया 2, एंड देन 3, तो 3 out of 5 मार्क्स। तो it indicates a good, moderately good potential in the strength of business idea या प्रोडक्ट से रिलेटेड जो हमारा आइडिया, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड फिजिबिलिटी एनालिसिस में ये 5 क्वेश्चंस हमें ये आंसर दे देंगे, ठीक है। अब अगर आप इधर ही देखें तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की डिजायरेबिलिटी भी आ गई है, ऑल्सो योर प्रोडक्ट सर्विस डिमांड भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ type of first screen is actually a feasibility analysis, okay। so जो आपका बुक नंबर, पेज नंबर जो है वो 105 है, प्लीज नोट इट डाउन, ओके। 105 फ्रॉम द पेज, और अगर डिजिटल नंबर देखें तो दैट इज 126, सो दैट इफ यू वांट टू विजिट इट यू कैन इजीली विजिट। अच्छा, इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज में क्या चीज है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, इस केस में क्या है हमारे, फिलहाल नहीं है अटेक सिटी, none, okay, that is a good thing। Stage of industry life cycle, अब this is not a industry, this is a, हाँ इसका मतलब कि आप किस, हेयर इस बात को समझे, इट मीन्स आप टारगेट किस चीज को कर रहे हैं। यू आर टारगेटिंग इलेक्ट्रिशियंस की जो इंडस्ट्री है या प्लम्बर्स की जो है, या इससे रिलेटेड जितने भी काम घरों वाले होते हैं, तो वो तो सारी जिंदगी रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपके, जब तक आपके घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स मौजूद हैं, ठीक है, जब तक आपके घरों में पाइप्स मौजूद हैं। सो दिस मीन्स वी कैन से इट इज एन इमरजेंस फेज, +1 पॉइंट है इसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा या मेच्योरिटी फेज गुजर चुका है और आप डिक्लाइन की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या ग्रोथ कर रही है, वी कांट से कि ग्रो कर रही है तो वी विल गो, लेकिन डिक्लाइन भी नहीं कर रही, सो वी विल गो विद मॉडरेट ग्रोथ। मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्लम्बर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं या रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जा रही है, सम बट दोज नंबर्स रिमेन द सेम। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स एंड और सर्विसेज टू कस्टमर्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्या है, आपकी जो इंडस्ट्री है, यानी कि इस केस में आपकी जो सर्विस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मस्ट हैव है, इट इज अ मस्ट हैव, ठीक है। मस्ट हैव है, लाजमी हमें जरूरत है इस चीज की। इंडस्ट्री ऑपरेटिंग मार्जिन, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन मींस कि ओके फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, आपको मतलब इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर के साथ आप डीलिंग कर सकते हैं कि ओके हमें थोड़ा सा मार्जिन दो यार, ठीक है। सो इट इज़ वेरी हाई, सो अगेन यू विल गेट अ नंबर आउट ऑफ 5, आपके पास नंबर आ गया, ठीक है। सो इसी तरह अगर आप आगे बढ़ें तो 5 5 क्वेश्चन हर आपका जो पार्ट है ऑफ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, यू हैव दोस 5 क्वेश्चंस जिसका आपने आंसर करना है 5, लेकिन 5 बड़े अच्छे पेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ओके। एट द एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको मार्क्स मिलेंगे, द स्कोर्स विल रेंज फ्रॉम आइदर फ्रॉम -5 टू +5, ठीक है। सब अच्छा है +5, सब बुरा है -5। इफ यू आर एट -5 दिस मीन्स कि आपका वो जो टारगेट मार्केट है वो फेल हो, वो जो सॉरी जो पार्ट है वो फेल हो चुका है। सो इफ एनी वन रीचेज -5 तो दिस मीन्स योर
फिजिबिलिटी एनालिसिस रिक्वायर्स कि आप अपने बिजनेस को या तो रेनोवेट करें, दिस मीन्स को से रीडिफाइन करें, और कंप्लीटली अबेंडन कर दें उसको, ठीक है। एंड एट द एंड देयर इज एन ओवरऑल पोटेंशियल, आपको पता चल जाएगा कि हाई पोटेंशियल है, मॉडरेट पोटेंशियल है, या लो पोटेंशियल ओवरऑल। ओके, ओके जी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, और up till this lecture, ठीक है, lecture number 3, 1 2 3, this is a part of your midterm exams। Okay, so let me just stop the recording and screen sharing।